Okay. Hello dear students. In last lecture, exercise 1.4, question number 13 is completed. Now next in question number 14. Person A speak truth in 90% cases, whereas person B speak truth in 80% cases. Find the probability that person A and B differ in stating the same fact. कोई एक ही फैक्ट के लिए दोनों पर्सन क्या है, डिफर, यानी कि एक सही बोल रहा है यानी कि करेक्ट ट्रू, और एक गलत बोल रहा है यानी कि रॉन्ग ट्रू. A different B and B different A find out. Okay, differ in stating the same fact. एक ही फैक्ट के लिए दोनों का आंसर क्या है, डिफरेंट है. कोई एक सही बात बोल रहा है, कोई एक गलत बोल रहा है, यानी कि A different B और B different A find out. So here both the person A and B are independent event here. So A intersection B is find out P of A into P of B, law of multiplication. Okay, so write down event A is equal to person A speak truth. So new line, P of A is equal to 90 by 100. So probability P of A is 0.9. Now next new line, write down event B is equal to person B speak truth. New line, write down P of B is equal to 80 by 100, 80% cases. So 80 by 100, therefore value of B is equal to 0.8. Okay, now here both the person A and B, both are independent person. So multiplication, law of multiplication formula use. A intersection B means P of A into P of B. So write down sentence. Here event A and event B both are independent event. New line, therefore P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Value of P of A is 0.9 into value of P of B 0.8. Now using calculation 0.9 into 0.8. So A intersection B
is 0.72. Now next, find the question. Find the probability that the person A and B differ in stating the same fact. Underline differ in stating the same fact. कोई एक ही चीज़ के लिए दोनों का आंसर क्या है, डिफरेंट है, यानी कि A राइट बोल रहा है, B रॉन्ग बोल रहा है, B राइट बोल रहा है तो A रॉन्ग बोल रहा है, यानी कि A डिफरेंट B डिफरेंट A. Events A happens, event B does not happens, or event B happens, event A does not happen. Write down. Event C is equal to person A and B. Person A and B differ in stating the same fact. So write down in new line, P of C is equal to P of A different B, or means addition, P of B different A. Here intersection already find out, so using formula intersection. A different B means P of A minus P of A intersection B plus another bracket, event B happens, it means P of B minus P of A intersection B, event A does not happen. Putting all the value, P of A 0.9 minus P of A intersection B 0.72, bracket complete, plus another bracket, P of B 0.8 minus A intersection B is also 0.72. Now next step, using calculation, 0.9 minus 0.72, 0.18 plus, now in another bracket, 0.8 minus 0.72, 0.08. Addition both the values, 0.18 plus 0.08. Your answer is 0.26. It means 0.26 प्रोबेबिलिटी इसे कि जब बोथ पर्सन आर डिफरिंग सेम फैक्ट, एक ही चीज़ के लिए दोनों पर्सन डिफरेंट आंसर देंगे, ऐसा कब बनेगा, प्रोबेबिलिटी 0.26. क्लियर? यू आर कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 14. नाउ नेक्स्ट, इन लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. If three events A, B and C of random experiment are independent event, underline independent event, it means A intersection B intersection C means multiplication of all three events. P of A is given 0.2, P of B 0.3, P of C 0.5. Then find the A union B union C. Three events, law of addition formula used. So write down. Right, P of A is equal to 0.2.
P of B is equal to 0.3 P of C is equal to 0.5. Write the formula, law of addition. P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of A intersection C minus P of B intersection C plus P of A intersection B intersection C. Okay, here all three events are independent. Intersection means same formula is multiplication. Now next new line, write down, putting all the values 0.2 plus 0.3 plus 0.5 minus, in bracket, A intersection B means P of A into P of B. So write down in bracket 0.2 into 0.3, bracket complete, minus, in bracket, 0.2 into 0.5 minus, in bracket, 0.3 into 0.5 plus, in bracket, 0.2 into 0.3 into 0.5, bracket complete. Now next step, 0.2 plus 0.3 plus 0.5 minus, using calci, 0.2 into 0.3, 0.06 minus 0.2 into 0.5, 0.1 minus 0.3 into 0.5, 0.15, 15, and last plus 0.2 into 0.3 into 0.5, 0.03. Okay, answer, final answer, find out. 0.72. Okay, final answer 0.72. Check it everyone. Okay, now next topic 1.7, जो आपके कोर्स में इस साल नहीं है, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैंसिल कर देना, थियरी टॉपिक, लेकिन उसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 36, जो लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर का, इस चैप्टर का।
Okay. The sample data obtained about marks scored by a large group of candidates appearing for a public examination of 100 marks are given in the following table. In table given, marks and number of candidates. Paragraph. One candidate is randomly selected from those appearing for the public examination. उसमें से कोई एक ही कैंडिडेट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है. Find the probability that this candidate has scored, first question, less than 41 marks. So less than 41 marks, number of candidates 83 plus 162. Number 2, more than 60 marks, more than 60, above 60, last two column, number of candidates 326 plus 124. And last question, marks from 21 to 80, middle three column, number of candidate 162 plus 496 plus 326. Okay. So first of all, addition, find out total number of candidate. Write down the number of candidate, selected in a sample, in the sample is n is equal to 83 plus 162 plus 496 plus 326 plus 124. So number of candidate n find out. Total is 1191. 1191. First question, less than 41 marks. It is considered by event A. So write down event A is equal to selected candidate marks less than 41 marks, less than 41 marks. Now new line. Favorable outcomes of event A is favorable outcomes of event A is okay, less than 41 marks means first two column total M is equal to 83 plus 162. M is equal to 245. यानी कि 245 कैंडिडेट ऐसे कि जिसका स्कोर क्या है, लेस देन 45 मार्क्स. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. P of A is equal to m upon n
245 डिवाइड बाय 1191. आप डेसिमल में आफ्टर पॉइंट 4 डिजिट राइट कर सकते हो. आफ्टर पॉइंट 4 डिजिट. ओके. सेकेंड क्वेश्चन. More than 60 marks. More than 60 means last 2 column total. Check it. Number of candidate 326 and 124. Write down number 2. Consider by event B. Event B is equal to selected candidate has scored more than 60 marks. Has scored more than 60 marks. Next, new line. Favorable outcomes of event B is favorable outcomes of event B is new line. M is equal to more than 60 marks, number of candidate 326 plus 124. So total M is equal to 450. Check it. New line. Find the probability for the event B. P of B is equal to M upon N. M favorable outcomes total 450 and N number of outcomes 1191. So event B probability of 450 upon 1191. And last question number 3. Marks from 21 to 60 between. Write down it. Consider event C. Event C is equal to selected candidate has scored between 21 to 60 marks. Has scored between 21 to 60 marks. It means central 3 column number of candidates total addition. New line. Favorable outcomes of event C is favorable outcomes of event C is new line. M is equal to 162 plus 496 plus 326. Okay, find out total number of candidate 984. Now next find the probability of event C. P of C is equal to M upon N. 984 upon 1191. Okay. The probability of event C is 984 upon 1191.
91. Here completed illustration number 36. Now next, last example. A factory run in 2 shift. कोई एक फैक्ट्री जो 2 शिफ्ट में काम कर रही है. The sample data about the quality of item produced in this shift are showing in the following table. तो जो प्रोडक्शन है उसके रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन टेबल में शो की है. क्वालिटी शिफ्ट 1, 2 लास्ट टोटल. क्वालिटी में 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्टिव आइटम एंड नॉन डिफेक्टिव आइटम इज गिवन. Then after last total, after table paragraph, one item is randomly selected from the production of the factory. जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से कोई एक ही आइटम रैंडमली क्या करनी है, हमें सिलेक्ट करनी है. नंबर 1, if the item is taken from the production of the first shift, find the probability that it is defective. आइटम डिफेक्टिव है लेकिन कब, जब वो शिफ्ट 1 में से प्रोडक्शन हुए. इट मीन्स कंडीशनलिटी प्रोबेबिलिटी इज गिवन. कंडीशनल, बराबर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम है. डिफेक्टिव है बट कहाँ से, यदि वो शिफ्ट 1 में से प्रोडक्शन हुए तभी वो डिफेक्टिव है. इनके डिफेक्टिव आइटम डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट 1. एंड सेकेंड क्वेश्चन, इफ द आइटम इज डिफेक्टिव देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट शिफ्ट. फर्स्ट शिफ्ट में से आइटम सिलेक्ट हो लेकिन वो क्या हो, डिफेक्टिव हो. यानी कि फर्स्ट शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन डिफेक्टिव आइटम. नहीं, हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है, डिफेक्टिव आइटम एंड अनदर शिफ्ट 1. तो जो शिफ्ट 1 है उसे हम ए से कंसिडर करेंगे एंड डिफेक्टिव आइटम इज कंसिडर बाय डी. शिफ्ट 2 एंड नॉन डिफेक्टिव आइटम की हमें कुछ भी ज़रूरत है नहीं, यानी उसको हम ध्यान में नहीं लेंगे. तो राइट डाउन फर्स्ट. टोटल n is given 5000. देखो बोथ साइड टोटल रो एंड कॉलम. राइट डाउन n is equal to 5000. New line, event A is equal to item selected of the first shift. Item selected of the first shift. टोटल चेक करो फर्स्ट शिफ्ट में कितने, 200 आइटम प्रोड्यूस इन शिफ्ट 1. चेक इट, लास्ट रो में टोटल देखो. सो न्यू लाइन राइट डाउन, P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N 200 upon 5000. Probability of P of A. New line, event D is equal to, डिफेक्टिव आइटम को हम D से डिनोट करेंगे. इवेंट D is equal to selected item is defective. Selected item is defective. So check it, total number of defective item, second row, last column total 70 item is a defective from the both the shift. So write down P of D is equal to M upon N 70 upon 5000. P of D.
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज गिवन, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इंटरसेक्शन बोथ द इवेंट ए इंटरसेक्शन डी। तो अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्केल लेके पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ कर दो, शिफ्ट 1 की कॉलम में राइट एंड डिफेक्टिव आइटम की रो में, और दोनों एक दूसरे का क्रॉस कहाँ पे करते हैं वो आपका इंटरसेक्शन होगा। चेक इट। आइटम प्रोड्यूस इन शिफ्ट 1 एंड डिफेक्टिव, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, शिफ्ट 1 एंड रो, कॉलम एंड रो की लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे आएगा? 24 इज द इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू। चेक इट इन क्वेश्चन में मैंने बोला लाइन ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट 1 यानी कि आप कॉलम में लाइन ड्रॉ करेंगे एंड डिफेक्टिव आइटम यानी रो में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बोथ जो लाइन है कहाँ पे क्रॉस होगी? 24 में। चेक इट। तो 24 आपका क्या हुआ? इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू इन बोथ द इवेंट्स ए एंड बी। राइट डाउन इवेंट A intersection D is equal to event A intersection D is equal to selected item produced in shift 1, selected item produced in shift 1 and it is defective, underline and means intersection. Okay, and it is defective, and means intersection. Write down new line. P of A intersection D is equal to M upon N. Here M 24 item defective and produced for shift 1 upon 5000. Next, in question 1, event D given that of A, event D given that of A, D depending on A, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लर्न किया था। ओके, आइटम इज डिफेक्टिव, लेकिन कब? जब वो शिफ्ट 1 में से प्रोडक्शन की हो तब। इवेंट D given that of A is equal to if the item production of the first shift then it is defective, मैंने पहले भी आपको बताया कि if and then it means conditionality. Okay, conditional probability related sum is given. New line, write the formula. P of D given that of A is equal to P of A intersection D upon P of A. P of A intersection D upon P of A. Putting value A intersection D 24 upon 5000 divide by P of A 2200 upon 5000. Numerator denominator both side 5000 cut. Your answer probability D given that of A is equal to 24 upon 2200. Okay, first question here completed. Number 2, event
A given that of D is equal to event A given that of D is equal to, if the item is defective, if the item is defective, then it is production of the first shift. Then it is production of the first shift. New line, write the formula. P of A given that of D is equal to P of A intersection D upon P of D. Now next step, putting values. P of A intersection D, 24 upon 5000 divided by value of P of D, 70 upon 5000. Numerator denominator 5000 cut. Your final answer, P of A given that of D is equal to 24 upon 70. Okay. Here completed illustration number 37. Now next, लिमिटेशन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट एक्सरसाइज 1.5. First question, the sample data about monthly traveling expense in rupees of large group of travelers of local bus in a mega city are given in the following table. कोई एक मेगा सिटी है, उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस ओके कोई एक ट्रैवलर्स ग्रुप का दिया हुआ है. आफ्टर टेबल, 1 person from दिस मेगा सिटी ट्रैवलिंग बाय लोकल बस इज़ रैंडमली सिलेक्टेड. उसमें से किसी एक को रैंडमली क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथली ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ दिस पर्सन विल बी, नंबर 1, मोर देन ₹900. मोर देन ₹900 मीन्स लास्ट कॉलम टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स 174 ऐसे कि जिसका एक्सपेंस मोर देन ₹900. सेकेंड, एट द मोस्ट ₹700, एट मोस्ट 700 यानी कि मैक्सिमम लेवल आ गया उसका 700 एंड लेस देन 700 यानी कि फर्स्ट 2 कॉलम नंबर ऑफ ट्रैवलर्स टोटल. एंड थर्ड, ₹601 or more but ₹900 or less. Central 3 column values, number of travelers addition. Clear? Write down the total number of travelers, the total number of traveler in the sample is n is equal to
318 plus 432 plus 639 plus 579 plus 174. Okay, and total number of travelers? 2142. Check it. 2142. Okay, any one person are randomly selected, one person. So number one, first question, denoted by event A. Write down event A is equal to selected person monthly travel expense will be rupees 900 and more. 900 and more. In other words, more than 900 rupees. New line. Favorable outcomes of event A is favorable outcomes of event A is new line M is equal to 174. P of A find out, M upon N, 174 upon 2142. Okay, your first question is completed. Okay, second question is consider our event B. Write down event B is equal to selected person monthly traveling expense at the most rupees 700, at the most rupees 700. New line write down favorable outcomes of event B is favorable outcomes of event B is new line M is equal to first two column total 318 plus 432 750 at the most 700 rupees monthly traveling expense, number of travelers 750. Find out P of B, M upon N, 750 upon 2142.
Okay, your second question is completed. Next, last question is consider event C. Write down. Event C is equal to selected person monthly travel expense will be rupees 601 or more, but rupees 900 or less, New line. Favorable outcomes of event C is okay, between 3 column total. M is equal to 432 plus 639 plus 579 1650. Total number of travelers. Monthly travel expense between rupees 600 to 900, 1650. Find the event P of C, M upon N, 1650 upon total number of outcomes N, 2142. This is your final answer P of C. Probability is 1650 upon 2142. Here completed question number 1.